morning, guys. Welcome to Brugge's Maths Academy. बच्चा लोग, in this particular session, we are going to discuss last type of height and distance, which is type 6 sum. ठीक है बेटा? So in this type is categorized as speed distance type sum. Okay बेटा? तो ये वाले sum में, ये वाले type में हम लोग discuss करेंगे the sums which involve speed and time. Okay? So let's get started with type 6 sum number 1. A man on the top of the vertical tower observes a car moving at a uniform speed. It takes 12 minutes for angle of depression to change from 30 to 45 degrees. How soon after this car will reach the observation tower? तो देखो बेटा, एक कार मूव कर रही है towards the tower. It takes 12 minutes for angle of depression to change from 30 to 45. 30 degrees. 45 degrees. उन्होंने बोला है हाउ सून द कार विल रीच दिस, इधर से इधर 30 डिग्री से 45 डिग्रीज कन्वर्ट करने के लिए इट टेक्स 12 मिनट्स. ओके, सो उन्होंने बोला है हाउ सून आफ्टर दिस विल कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर. मतलब ऑब्जर्वेशन टावर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. सो लेट अस अज्यूम इट टेक्स 3 मिनट्स. ठीक है बेटा, इधर से पॉइंट डी से सी आने में उनको 12 मिनट्स लगा. सो दे आर आस्किंग हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच बी. सिंपल है, एकदम सिंपल है बेटा. ओके, समझ में आया क्वेश्चन बेटा? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं ना सिंस द स्पीड सब कुछ आपको मिनट्स में ही है एंड वी डोंट हैव टू फाइंड the speed of the car. We don't have to find the speed of the car. So let us assume speed to be x meters per minute ही. तो CD distance जो है वो कवर होगा कितने मिनट, कितना डिस्टेंस कवर होगा 12x स्पीड इनटू टाइम. ओके, एंड BC के लिए कितना डिस्टेंस कवर होगा tx. ओके, तो फर्स्ट ये कार ट्राइंगल लेते हैं, ABC ट्राइंगल लेते हैं बेटा. ओके मेरे बच्चा, एंड सेकेंड अपना ये है. ओके मेरा बच्चा लोग, पूरा BD कितना होगा TX प्लस 12x. टेक x कॉमन, T प्लस 12. ओके बेटा, चलो तो फर्स्ट ये कितना एंगल है 45 डिग्रीज. तो फर्स्ट tan ऑफ 45 डिग्रीज h अपॉन dx. इक्वेशन नंबर 1 h इज tx आया अपने को. ठीक है बेटा. सेकेंड tan 30 डिग्रीज इज h upon x t plus 12. 1 by root 3 is equals to h x t plus 12. देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. x t plus 12 is equals to root 3h. बेटा रिप्लेसिंग h with tx बेटा, रिप्लेसिंग h with tx. h का वैल्यू क्या है बेटा tx है बेटा. सो आई एम रिप्लेसिंग h with tx. x get cancel, so I'm left with t plus 12 is equals to root 3t बेटा. वैसे मुझे t ही ढूंढना था, so अच्छा हुआ only t वेरिएबल इज लेफ्ट बिहाइंड. okay, so t is 12 upon root 3 minus 1. I'll rationalize this बेटा. So it takes 16.392 minutes from point C to reach the tower. ठीक है बेटा. Understood how I did the calculation? एक बार आराम से देखो बेटा.
ओके, सिंस द क्वेश्चन वाज गिवन इन मिनट्स, स्पीड ऑफ कार ढूंढना नहीं था, इसे आई टुक स्पीड टू बी x मीटर्स पर मिनट. ओके बेटा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस, डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड x इंटू टाइम 12, स्पीड x इंटू टाइम t. ओके, वी वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द टाइम t फ्रॉम c टू b. प्लीज पॉज दिस वीडियो, आराम से देखो बेटा. Again, I'm repeating, you could have asked me question, sir, why you're not converting minutes to seconds? My answer is, in this particular question, since they have not asked us to find the speed of the car, okay, so whether I take x meters per minute or meter per second is not going to change. Since the time was already given in minutes, no point changing into seconds and doing hassles. Thus, I'm assuming the speed to be x meters per minute. But in the next sum, you will observe they will ask us to find the speed of the car also. So I'll assume meter per second. And in that, I'll convert time from minutes to seconds. You have to make sure you understand this question very well. एकदम शांति से सुनो, अच्छे से देखो, फिर से करो. We are talking about distances. Distance होता है speed into time. Hence I took 12 minutes as 12 into x, t into x. ठीक है मेरा बच्चा लोग, please pause this video and try to solve next sum on your own. चलो, let us start with the second question. Second question, mark it important. A man on the cliff observes the boat at an angle of depression 30, which is sailing towards the shore. 3 minutes later, the angle of depression changes to 60. ठीक है बेटा, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, फिर 60 हो गया. एज कितना दिया है? 500 मीटर्स दिया है. ओके, ये 3 मिनट्स था, 180 सेकेंड्स, सो 180x इज द डिस्टेंस कवर्ड. उन्होंने पूछा कितना टाइम लगेगा, सो t सेकेंड्स. डिस्टेंस कवर्ड विल बी tx. ओके, डिस्टेंस कवर्ड विल बी tx. ओके मेरा बच्चा लोग, लेट स्पीड बी x meters per second. Whenever they ask you to find the speed of the car, it should be meter per second. The first small diagram, I always prefer to draw diagram. So tan 60 degrees is 500 upon tx beta. Root 3 is equals to 500 upon tx. So tx is 500 upon root 3. Second, tx plus 180x, 30 degrees, 500. So tan 30 degrees is opposite upon tx plus 180x. 1 by root 3 is equals to 500 tx plus 180x. tx plus 180x is equals to 500 root 3. Substitute here beta. So 180x is equals to 500 root 3. Okay मेरा बच्चा लोग, 180x is equals to 500 root 3. One 180x is equals to 500 root 3 minus 500 upon root 3. Okay बेटा, आपको अच्छे से दिखे इसलिए आई एम जस्ट राइटिंग प्रॉपर्ली. ठीक है बेटा, so 180x is equals to 500 into 3 minus 500 upon root 3. So 180x is equals to 1500 minus 1000, 1500 minus 500 upon root 3. So x is 1000 upon 180 root 3. x is 50 upon 9 root 3. 2 से डिवाइड किया, रैशनलाइज करता हूँ बेटा. x is 50 root 3 upon 27 मीटर पर सेकेंड. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको जस्ट कहीं नेम सेक के लिए हम लोग, नेम सेक नहीं मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ के लेके आते हैं बेटा. 3.21 होगा, 3.21 मीटर पर सेकेंड. ओके मेरा बच्चा लोग, नाउ वी नीड टू फाइंड टाइम. So tx is 500 upon root 3 beta. So
t into x 50 root 3 upon 27 is equals to 500 upon root 3. 50 cancel beta. So t is 270 upon root 3 into root 3. So t is 270 upon 3. T is 90 seconds. Therefore t is 1 minute 30 seconds. Guys, please go through मैंने कैसे solve किया ये पूरा. Okay, I request you to follow and replicate it for the next sum. Next sum का diagram I just briefly explain. ठीक है. Third sum you will solve on your own. Third sum में in fact you to solve till this part only. You don't have to solve time. Okay. So please make sure you pause this video. Question number 3 read करो. Question number 3 read करो and try to solve on your own. You to find x. Same way से करना है. Same way से. Okay. Trust me. हम लोग जितने 4 सम्स कर रहे हैं, ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 सम्स. 2 सम किया है, थर्ड सम आई एम जस्ट डिस्कसिंग एंड देन द फोर्थ वन. इसके बाहर आने के चांसेस बहुत स्लिम है. सो प्लीज मेक श्योर वॉट एवर सम्स आई एम डूइंग, डू इट थॉरली. Try to replicate on your own. Try to do calculation on your own. Will be very, very helpful. Okay, beta? Third one. A man in a boat. I'm just drawing a diagram for you. You have to solve on your own. A man in a boat rowing away from the lighthouse 150 meter high. Okay, lighthouse है 150 meter high. It takes 2 minutes for angle of elevation to change from 60 to 45. तो पहले elevation कितना था 60 degrees, अभी 45 degrees हो गया. 2 minutes बोला है बेटा. So 120 seconds. We have to find the speed. Let speed be x meter per second. ओके मेरा बच्चा लोग कर पाओगे खुद. जस्ट गिव अ ट्राई. चलो मैं कर ही लेता हूँ आपके साथ, ठीक है, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. बट आई रियली वांट यू टू ट्राई ऑन योर ओन. रैशनलाइज बेटा. अगर 2 डेसिमल इतना है तो 0.53 मीटर पर सेकेंड. See how I'm doing the calculation. That is more important. How I'm taking rationalizing. How I'm taking LCM. How I'm taking the common factor. How I'm cancelling. That is more important, बेटा. ठीक है? Please try to solve on your own, guys. Then only you will gain confidence. Okay? इतना मैं बोल सकता हूँ कि हमें जितने सम्स कर रहा हूँ उसमें से ही आएंगे. So please be rest assured and just follow my instruction. Just follow my instruction. ठीक है बेटा? Guys, हम लोग टाइप 6 का लास्ट सम करते हैं ना. So this will be the last sum of the chapter, last sum of the type. Okay. Please go through our entire video series for this chapter, beta. Superb. We have explained all kind of sums. Will be very, very helpful to you, beta. So एक बार अच्छे से please go through करो. चलो. Very nice sum. An aeroplane flying 1 kilometer above the ground. देखो बेटा इधर plane है. Okay. So this position is a plane. It is flying 1 kilometer above the ground. मतलब 1000 meters above the ground.
The angle of elevation is 60 degrees. कितना है? 60 degrees. After 10 seconds, the angle of elevation changed to 30 degrees. अभी plane इधर आ गया, ठीक है? In 10 seconds. Okay, so distance covered from here to here is how much? 10x. Let speed be x meter per second. मेरा बच्चा लोग दो again I'm telling you, though they have said, बच्चा लोग उन्होंने बोला है to find the speed in kilometer per hour, I am taking meter per second. Later I'll convert. Let us assume from here to here the distance covered is a. ठीक है? So when I take about smaller triangle, 60 degrees, 1 kilometer मतलब 1000 meters, and this is a. Let us name it A, B, C, D, E. So ABE triangle. Okay. So tan 60 degrees is 1000 upon A. Root 3 is 1000 upon A. So A is 1000 upon root 3. Second, A plus 10x beta. This is 30 degrees. This is 1000 meters. So tan 30 degrees is 1000 upon A plus 10x. 1 by root 3 is 1000 upon A plus 10x. Therefore, A plus 10x is equals to 1000 root 3. So 10x would become 1000 root 3 minus A. Minus A क्या है? 1000 upon root 3. Okay. So 10x would be, take 1000 common, root 3 minus 1 by root 3. So x would be 1000 upon 10, 3 minus 1 upon root 3. So x is 200 by root 3 meter per second. Just rationalize. Kilometer per hour, meter per second to kilometer per hour, 18 by 5. Multiply by 18 by 5 to convert meter per second to kilometer per hour. This should be our answer. Hope so आपको समझ में आया हो बेटा. The entire part, the way we did it beta. Please try to solve on your own guys. Then only you will achieve something. Thank you so much for listening us out. Have a great time. Please go through all our videos of height and distances. Very well made, newly made, only for you all. Thank you so much.